Hello, civil service aspirants. I welcome you all to this YouTube live class organized on behalf of StudyIQ. In today's YouTube live class, I would make a discussion about Karl Marx's contribution to sociology and basically the philosophy of Karl Marx. Hello students, at the outset, I would like to tell you the fact that Karl Marx was a 19th century thinker, 19th century philosopher of the world. Karl Marx's lifespan was 1818 to 1883 AD. Marx was born in Germany. And Karl Marx is popularly known as the father of communism. What is communism? Communism refers to a political philosophy by which it is thought that in future a society characterized by equality will emerge all over the world. In a communist society, all people would be placed equally. There would be no rich persons, no poor person, no exploiter, no exploited, no haves, no have-nots. All people would be placed equally. This is communist society, and the philosophy of communist society is called communism, and Karl Marx is popularly known as the father of communism. पिलामाने कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाए. And now I am discussing the basic philosophy of Karl Marx. Why? Because for the purpose of understanding Karl Marx's contribution to sociology, it's necessary to understand the philosophy of Karl Marx, because philosophy of Karl Marx has connection with all the contribution that he has made to sociology. पिला माने कार्ल मार्क्स कर फिलोसफी रो कनेक्शन अछि तांकर कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी प्रति जहा अछि. कोन कार्ल मार्क्स कर कंट्रीब्यूशन तब सोशियोलॉजी प्रति अछि? कार्ल मार्क्स कर मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी हला द थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल. सेकंड कंट्रीब्यूशन होछि थ्योरी ऑफ एलिनेशन. थर्ड कंट्रीब्यूशन होछि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. Fourth contribution of Karl Marx is mode of production. So in your OPSC syllabus as well as OPSC syllabus of sociology, 4 contribution of Karl Marx has been categorically mentioned both by OPSC and UPSC. What are the 4 contributions? First is your theory of a class and class struggle. Second is theory of alienation. Third is dialectical materialism or historical materialism, and fourth one is mode of production. And these 4 contributions of Karl Marx has connection with his philosophies. Once you understand the philosophy of Karl Marx, for understanding the contribution of Karl Marx to sociology would become very easy and interesting for you. That's the reason at the outset I am explaining you what are the basic philosophies of Karl Marx. पिला माने Karl Marx कर basic philosophy कौन सेटा आगे मु बुझाई दोची तापरे हमें contribution of Karl Marx को जिबा. philosophy कहिले पिला माने एठी तमे बुझीबो methods of Karl Marx. को method Karl Marx यूज करथि. The most important philosophy of Karl Marx is collectivism. सबुठ इंपोर्टेंट फिलोसफी होची कलेक्टिविज्म. केमिति हमें कलेक्टिविज्म के बुझाइबा? लेख कलेक्टिविटी प्लस इज्म, दैट इज कलेक्टिविज्म. कलेक्टिविटी अर्थ हला ग्रुप, इज्म अर्थ होची फिलोसफी. एनी इज्म अर्थ फिलोसफी बा अप्रोच. मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, गांधीज्म, माओइज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटलिज्म, कम्युनलिज्म, रिजियोनलिज्म, प्रोविंशियलिज्म. Okay, any ism means philosophy. So collectivity अर्थ group, ism अर्थ philosophy. So the philosophy of a group is called collectivism. What is that philosophy of a group?
So collectivism is an approach of Karl Marx by which it is thought that an individual should be mentally prepared to sacrifice his personal interest for the betterment of the group. Repeating it again, collectivism is a philosophy of Karl Marx by which it is thought that an individual should be mentally prepared to sacrifice his personal interest for the betterment of the group. जे व्यक्ति निजर स्वार्थ को समष्टि बा ग्रुप लगी त्याग करवाटा को कहा जाए कलेक्टिविज्म. ऑल ऑफ यू आर क्लियर. देखो आवर फैमिली इज रनिंग बिकॉज ऑफ कलेक्टिविस्टिक स्पिरिट. यस और नो? योर फादर इज अर्निंग मनी बट ही इज नॉट स्पेंडिंग ऑल द मनी दैट ही इज अर्निंग. योर फादर इज स्पेंडिंग गिविंग यू मनी. सेठी से तंकर पर्सनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करछन ना नाही. दिस इज कॉल्ड कलेक्टिविज्म. ओके. So collectivism is a philosophy of Karl Marx by which it is thought that an individual should be mentally prepared to sacrifice his personal interest for the betterment of the group. Okay. Second philosophy of Karl Marx is economic determinism. Economic determinism की derive कर दिया. Economic plus determine plus ism is called economic determinism. What is economics? Economics is primarily concerned with the production, consumption and distribution aspect of social behavior. मनीष केमिति प्रोडक्शन करुची, केमिति कंज्यूम करुची, केमिति डिस्ट्रीब्यूट करुची विभिन्न गुड्स और सर्विस की ताकू जे स्टडी करे दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी. सो इकोनॉमी primarily concerns with the earning and spending aspect of human beings behavior. मनीष केमिति पैसा रोजगार करुची, केमिति पैसा खर्च करुची ताकू जे बुझाए सेटा होची इकोनॉमी. डिटरमाइन एंड इजिम मीन्स फिलोसफी. सो व्हाट इज इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म? पिला माने मने रख, गोटे मनीषर जीवन रे बहुत गुड़े एस्पेक्ट अच्छी. गोटे है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, मनीष केमिति पैसा रोजगार करुची खर्च करुची. तापरे होची कोन रिलीजियस एस्पेक्ट, मनीष ठाकुर भगवान ने विश्वास करुची कि करू नाही सेटा जे डील करुची दैट इज रिलीजियस एस्पेक्ट. तापरे पॉलिटिकल एस्पेक्ट, मनीष केमिति भोट रे पार्टिसिपेट करुची, काहाकू भोट दउची, निजे इलेक्शन लढुची कि नाही से कथा जे डील करे दैट इज पॉलिटिकल एस्पेक्ट. बुझे होची. तापरे नेक्स्ट होची कोन ना मनीषर ब्यूरोक्रेटिक एस्पेक्ट अच्छी, से ब्यूरोक्रेसी रे चाकरी करची कि नाही, जदि निजे न करिची सी विभिन्न ऑफिसर बा क्लरिकल स्टाफ को कौन सी सर्टिफिकेट अप्लाई करिया पई लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, लाइक इनकम सर्टिफिकेट लगी ब्यूरोक्राट को पाख को जाउची कि नाही. एमती मनीष जीवन में विभिन्न गुड़े. तापरे तमर एजुकेशनल एस्पेक्ट, मनीष कौन पढ़ुची, को क्लास पर्यंत पाठ पढ़ी, ये सब जिनस को जे डील करची दैट इज एजुकेशनल एस्पेक्ट. एजुकेशनल एस्पेक्ट रे पुनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दबाटा भी एग्जामिनेशन एजुकेशनल एस्पेक्ट रे आसीबो. तेणु मनीष लाइफ रे बहुत गुड़ाए एस्पेक्ट अच्छी. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट, एजुकेशनल एस्पेक्ट, ब्यूरोक्रेटिक एस्पेक्ट. ये बहुत गुड़े एस्पेक्ट जो मनीष लाइफ रे अच्छी ता भितर इकोनॉमिक एस्पेक्ट कार्ल मार्क्स का लगे मोस्ट इंपोर्टेंट. कार्ल मार्क्स कहते इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ डिटरमाइन्स रेस्ट ऑफ हिज एस्पेक्ट्स. अर्थात कार्ल मार्क्स कहिबे जो लोक पाखरे बहुत पैसा अच्छी तार इलेक्शन लड़िकी जितबार संभावना अधिका अच्छी. सो इकोनॉमिक एस्पेक्ट इज डिसाइडिंग पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ विनिंग इलेक्शन. तापरे इकोनॉमिक एस्पेक्ट तुम लीगल एस्पेक्ट को भी डिसाइड बा डिटरमाइन करिवो. कार्ल मार्क्स को जदि पचारिबो, कार्ल मार्क्स कहिबे तुम जदि पचारिबो को लोक कोर्ट रे केस लड़िकी जितबार संभावना अधिका अच्छी, कार्ल मार्क्स will tell you the fact that the person who is having good monetary position,
his possibility of winning cases in court of law is also higher. कार्ल मार्क्स को जदि पचारिबो को पिला कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे सक्सेसफुल हबार संभावना अधिका, कार्ल मार्क्स कहिबे जो पिलार पेरेंट्स पाखरे बहुत पैसा अछि से पिलाटा विभिन्न कोचिंग सेंटर रे जाइकी ओएस आईएएस लगे कोचिंग नहीं पारिबो आ भलो कोचिंग सेंटर रे पाठ पढ़िले भलो टीचर को गाइडेंस रे obviously his or her possibility of becoming successful in competitive examination will be also higher. बुझे होचे ना नहीं? तेणु कार्ल मार्क्स मनीष जीवन ने जो बहुत एस्पेक्ट अच्छी से एस्पेक्ट भितर इकोनॉमिक एस्पेक्ट उपर इंपोर्टेंस दौरान सी कहते सक्सेस इन एजुकेशन, सक्सेस इन रिलीजन, सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सक्सेस इन लीगल मैटर डिपेंड्स अपन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पावर ऑफ ए पर्सन. जदि मनीष पाखरे लोकटे पाखरे बहुत पैसा अच्छी ताहले तार अलगा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ रे सक्सेस रो पॉसिबिलिटी अधिका अच्छी. बुझी होची ना नहीं? पिला माने फॉर एग्जांपल मु कहिबी दीटा कैंडिडेट आसिले इक्वाली टैलेंटेड कैंडिडेट आईएएस लगी प्रिपेयर करचंती. दी जनक भितरु जणे धनी घर रो पिलाटे जणे गरीब घर रो पिलाटे दी जनकर टैलेंट किंतु समान. यदि कंपटीशन दीटा इक्वाली टैलेंटेड पिलांक भितरे हुए ताहले से दीटा टैलेंटेड पिला भितरु जो पिलार पेरेंट्स को पाखरे अधिका पैसा अच्छी तार पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस आईएएस बा ओएस भलिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रे अधिका रहिबो. ता माने इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमिक स्टेटस is deciding or determining your success in competitive exam provided competition is taking place between two equally talented person. जदि जने talented जने stupid हैला सेटा अलगा कथा, but if a competition is made between two equally talented candidates for IAS or OS exam, then the possibility of success on part of the talented and rich candidate is higher than the possibility of success in IAS or OS like competitive exam on part of the talented and poor student. Got my point? सेमती जदि दीटा लोकंक केस रे लढुचंती जणे धनी आ जणे गरीब सेम एलिगेशन दी जनक ना रे कोर्ट रे हेची ताहले कार्ल मार्क्स कहिबे जो लोकटी धनी तार कोर्ट रे जितिबार संभावना अधिका अच्छी. तेणु एटा होची इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म. इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म इज ए अप्रोच ऑफ कार्ल मार्क्स बाय व्हिच इट इज थॉट दैट सक्सेस इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ ए पर्सन. ऑल ऑफ यू आर क्लियर? So this is economic determinism. सेटा को भी कहा जाए इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म की कहा जाए also substructure superstructure relationship. Substructure superstructure इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म की कहा जाए substructure superstructure relationship. सबस्ट्रक्चर सुपरस्ट्रक्चर रिलेशनशिप. कौन सबस्ट्रक्चर सुपरस्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर मीन्स विजिबल मटेरियल जोटा तुम छुई पार देखी पार दैट इज स्ट्रक्चर. सब माने बिलो, सुपर माने एबव. देख माटी तले जोटा थाए दैट इज सबस्ट्रक्चर, माटी ऊपर को जोटा थाए सेटा सुपरस्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल तमे गोटे बिल्डिंग करछ, तमे धर 3 स्टोरेड बिल्डिंग कल, आगे बिल्डिंग करने पूर्व तार फाउंडेशन करदेव. फाउंडेशन माटी तले रहिला, तापरे गोटे बिल्डिंग तमे कल. बिल्डिंग करने पूर्व फास्ट तमे तार फाउंडेशन करिवो. So you want to construct a building. Before constructing the building, first you are constructing the foundation. फाउंडेशन रहीगला माटी तले. धर 3 ताला घरटे करूछ त
एटा हला तीन तला घर, एटा तीन तला घर कल, एटा हला फाउंडेशन तळक रहिला, एटा हे गला सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, एगुड़ा को सब कहला सुपर स्ट्रक्चर। तेणु सब अर्थ बिलो, बिलो द ग्राउंड दैट इज सबस्ट्रक्चर, super अर्थ above the ground that is superstructure. If you want to construct a 3-story building, first of all you have to construct the foundation of the building. Once foundation of the building is constructed, then you construct the first floor, second floor, third floor. So foundation is called substructure, first, second and third floor is called superstructure. आम जोटा को इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म कहते तार आउ गोटे ना कार्ल मार्क्स दौरान सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर रिलेशनशिप कौन से तीन तला घर तुम करदेल, घर करदेला दिने तुम घर गृह प्रवेश है, हाउस वार्मिंग सेरिमनी, जो गृह प्रवेश है लोक मान को डाकिल, तुम बंधु बांधव रिलेटिव मान को डाकिल, से आसिले देखिले बिल्डिंगटा बढ़िया है, समस्ते कहले बिल्डिंग इज भेरी गुड, जोटा देखा जाउची कोटा देखा जाउची माटी ऊपर को थिबा अंश देखा होची, माने सुपर स्ट्रक्चर को से माने देखिले, देखि कहले बिल्डिंग इज भेरी गुड। डज ए सिंगल रिलेटिव ऑफ योर से दैट द फाउंडेशन इज गुड? कारण फाउंडेशन को देखा जायनी, जे फाउंडेशन गुड न हबो बिल्डिंग गुड हबो। इफ फाउंडेशन इज वीक बिल्डिंग विल बी कोलैप्स्ड वेरी सून। इफ फाउंडेशन इज सैंकी बिल्डिंग विल बी डिमोलिश्ड। बुझे होची फाउंडेशन टा सब स्ट्रक्चर सेटा देखा जाऊ ना खाली आखि की, बट स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग डिपेंड्स अपॉन द सब स्ट्रक्चर, हाँ ना नहीं? किंतु सब स्ट्रक्चर को आमे देखि न पारिबारु आमे केवल सुपर स्ट्रक्चर को एप्रिशिएट करछंती। कार्ल मार्क्स कहउछंती सोसाइटी रो गोटे सोसाइटी रो सब स्ट्रक्चर होची तार इकोनॉमी। इकोनॉमी इज द सब स्ट्रक्चर। Economy is the substructure of society. Rest of the things, polity, education, religion, these are the superstructure. P for polity, E for education, R for religion. जने एजुकेशन रे सक्सेसफुल हो गला, आईएएस परीक्षा रे सक्सेसफुल हो गला, ए वर्ष आईएएस रे जे सक्सेसफुल हेछि, तमे जदी कार्ल मार्क्स को पचारिबो, तमे पिला टिके देखिलो, देखी आईएएस टॉपर है तुम कहल ओ हाउ मच टैलेंटेड द आईएएस टॉपर इज। क्या कार्ल मार्क्स सब स्ट्रक्चर टाकू देखिए, ता बापा पाखरे आईएएस टॉपर बापा पाखरे केते पैसा थिला, केते पैसा खर्च करैकी से ताकू कोचिंग देइछंती, से कथा कार्ल मार्क्स कहिबे। तमे द मोमेंट यू सी द फोटोग्राफ ऑफ एन आईएएस टॉपर पब्लिश्ड इन एनी न्यूज़पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक हाउ much talented the IAS topper is. Had Karl Marx been with you, Karl Marx would have thought how much money his or her father has spent in the matter of getting him enrolled in coaching centers. बुझे होची कार्ल मार्क्स तेनो इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक स्टेटस इज a substructure of society. Politics, religion, education, judiciary, bureaucracy, they are the superstructure. So economic determinism is also called substructure, superstructure relationship. All of you are clear? Then come to next philosophy. Next philosophy of Karl Marx is dialectic. कौन dialectic? Dialectic अर्थ हला contradiction of opposite element. डायलेक्टिक रो अर्थ होची कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अपोजिट एलिमेंट। डायलेक्टिक रो अर्थ होची कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अपोजिट एलिमेंट्स। Dialectic. Next approach or next philosophy of Karl Marx is contradiction of opposite elements.
कौन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अपोजिट एलिमेंट देख कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अपोजिट एलिमेंट माने देख कही दउची गोटे डिबेट कंपटीशन को चिंता कर धर गोटे टॉपिक तुमको दिया हला इज कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जस्टिफाइड कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन टा जस्टिफाइड की ये टॉपिक टा जदी दिया हला तुमको यू आर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स one group of student would say yes caste based reservation is justified आउ गोटे ग्रुप रो स्टूडेंट कहबे नो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट जस्टिफाइड लेट रिजर्वेशन बी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल तमन देखो रिलेटेड टू दिस टॉपिक स्टूडेंट्स आर गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप and they are promoting mutually opposite views to each other for which discussion is made possible. Discussion is made possible. So dialectic means contradiction of opposite element is the root cause of social change. Society change kahi ki asuchi Karl Marx को जदि पचारिबो सी कहिबे चेंज आसुची कारण कोन होची सोसाइटी रे दीटा ग्रुप रो लोक अछंती व्हाट इज दैट फॉर एग्जांपल आजिरो कैपिटलिस्ट सोसाइटी तमे देखिबो कैपिटलिस्ट सोसाइटी माने इंडस्ट्री इज द मेन प्रोडक्शन मेन मोड ऑफ प्रोडक्शन इज इंडस्ट्री तेनु इंडस्ट्री रे दीटा ग्रुप रो लोक अछंती कोन किए इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रियल वर्कर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहूची वर्कर अधिका समय काम करू कम वेज नो वर्कर ग्रुप चाहूची मु कम समय परिश्रम करी बेसी वेज नेबी तेनु contradiction of opposite elements is involved in industry. This is the meaning of dialectic. So I want to tell you the fact that dialectic is an approach of Karl Marx by which it is thought that root cause of social change lies in contradiction of two opposite elements. बुझियला देखि दउची तमे कोन सब मेसेज देइछ आगे तुम मेसेज पढ़ी दउची तापरे नेक्स्ट डिस्कशन को जीवा सुदीप्ता किछे अच्छा बेसिक नॉलेज बेसिक नॉलेज 248 कार नाम जानी एमती ना सब अच्छी हाउस होल्ड और डोमेस्टिक ग्रुप भितर डिफरेंस कौन बतई दिंतु बतेबी जो फैमिली रिलेटेड फैमिली मैरिज किनशिप रिलेटेड कहबी सेति केवल बतेबी हला तापरे गोटे आ थेसिस आउट जीबी जीबी सेठी जीबी कहारी किछि डाउट्स नाही अच्छा दुई जन पिला लिखिछ सुदीप्ता बेसिक नॉलेज 248 डाउट किछि नाही गोटे डाउट बेसिक नॉलेज 248 तमरो अछि रिलेटेड टू हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप सेटा म कहिबी जतले फैमिली मैरिज किनशिप चैप्टर कहबी सेतिक बडे ओके अच्छा तेनो बुझी गलो फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स इज डायलेक्टिक नेक्स्ट फिलोसफी के आस नेक्स्ट फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स इज मटेरियलिज्म नेक्स्ट फिलोसफी होची मटेरियलिज्म कौन मटेरियलिज्म मैटर मटेरियल प्लस इज्म दैट इज मटेरियलिज्म मैटर रु हेची मटेरियल मटेरियल प्लस इज्म दैट इज मटेरियलिज्म कौन मटेरियलिज्म देख दीटा परस्पर विरोधी अप्रोच अच्छी गोटे होची मटेरियलिज्म गोटे होची आइडियलिज्म मटेरियलिज्म के डेराइव आइडियलिज्म के डेराइव कलो आइडिया प्लस इज्म दैट इज आइडियलिज्म देख मैटर टाकू आमे देखि परिबा आमे छुई परिबा वी कैन टच मैटर वी कैन सी मैटर बट आइडिया कैनॉट बी टच्ड आइडिया कैनॉट बी सीन आइडिया को देखी हबनी अच्छा मैटर प्लस इज्म दैट इज मटेरियलिज्म आइडिया प्लस इज्म दैट इज आइडियलिज्म आइडियलिज्म टा होची हिगेल कर फिलोसफी हिगेल कार्ल मार्क्स कर फिलोसफी होची मटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स कर होची मटेरियलिज्म कौन हिगेल कहउचंती हिगेल कहउचंती द रूट कॉज ऑफ सोशल चेंज लाइज इन द आइडिया दैट कम्स टू द माइंड ऑफ द पीपल स्टोर हाउस ऑफ आइडिया कौन माइंड मनुष्यर तेणु हिगेल कहउचंती
तमें जदि पृथ्वी की चेंज करने चाहूच प्रथमे मनीष मानकर आइडिया को चेंज कर दियो। फॉर एग्जांपल मु इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे कहूँ, इंडिया रे पोवर्टी अच्छी, इलिटरेसी अच्छी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अच्छी, ये सब प्रॉब्लम को केमिति मालनरिशमेंट अच्छी, ये सब प्रॉब्लम को केमिति आमे दूर करिबा। जदि हिगेल को तमे पचारिबो, हिगेल कहिबे फास्ट इंडियन लोकंक मन भितर को रैशनल लॉजिकल साइंटिफिक थॉट को एंट्री करी दियो। सो ट्राई टू इन्फ्यूज वेरी लिबरल रैशनल साइंटिफिक थॉट इनटू द माइंड ऑफ इंडियंस। जिते रैशनल लिबरल आइडिया आसी जे से माने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टा हम ना, फैमिली प्लानिंग की एक्सेप्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली देशर डेवलपमेंट हो। तेणु हिगेल कर अप्रोच होची आइडियालिज्म। इट मीन्स if we want to bring change in a country, first of all we have to change the ideas of the people in the country. That is idealism. But Karl Marx approach is just its opposite. It is materialism. Karl Marx को जदि पचारिबा how to bring change in India, Karl Marx idea कथा कहिबेनी। Karl Marx कहिबे farmers give power tiller and tractor, thresher, pump irrigation, boring irrigation to bore well to the farmers of India, give computer, laptop, tablet, smartphone to the students in schools and colleges, construct hospitals, schools in remote villages of the country, school हो, hospital हो, power tiller हो, tractor हो, tablet हो, laptop हो, एगुड़ा सब आमे देखी परिबा, छुई परिबा। कार्ल मार्क्स को पचारलो केमिति आमे इंडिया रो डेवलपमेंट करिबा, कार्ल मार्क्स कहिले इंडियन लोक मानकू एडवांस मैटर दे दियो, ए एडवांस मैटर संगे काम कले ऑटोमेटिकली लोकंकर डेवलपमेंट हे जिवो। सो कार्ल मार्क्स इज गिविंग इंपोर्टेंस अपन मटेरियल कंडीशन ऑफ सोसाइटी फॉर ब्रिंगिंग डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी। सो कार्ल मार्क्स अप्रोच इज कॉल्ड materialism. On the other hand, Hegel is giving importance to ideas for bringing change in society. As he is giving importance to idea, so Hegel's approach is idealism, and it is just the opposite of Karl Marx, that is materialism. All of you are clear? तापरे next approach of Karl Marx is revolutionism. कौन revolutionism? Revolution plus ism, that is revolutionism. Revolution plus ism, that is called revolutionism. Revolution means a sudden, substantial, significant change. Sudden, immediate, substantial and significant change. That is called revolution. Ism means philosophy or approach. So the approach of bringing revolution is called revolutionism. Karl Marx विश्वास करुचंती जे कम्युनिस्ट सोसाइटी फ्यूचर रे आनिया पाई प्रोलेटारिएट माने रिवोल्यूशन करिबा दरकार। सो कार्ल मार्क्स believes in the fact that proletarian revolution is inevitable and essential for bringing a communist society characterized by equality in future. That's the reason Karl Marx approach is called revolutionism. Important announcement related to study IQ. पिला माने study IQ रे मु ethics अर्थात GS पेपर 4, social issues अर्थात GS पेपर 1 एवं इंग्लिश से पढ़ाऊँगी सोशियोलॉजी सहित। जदि तमे आईएएस और ओएस रो रिटन सिलेबस देखिबो, रिटन एग्जाम रे 1750 मार्क रो परीक्षा होची, सेथरु 1100 मार्क मु पढ़ाऊँगी स्टडी आईक्यू रे। Apart from that, I also conduct 1-to-1 interview for UPSC as well as OPSC Viva Voce in Study IQ. In addition to that, I am having a Telegram group. My Telegram group is Think Civil Services, Think Saroj Sir. एटा मोर Telegram group. तमे जदि Study IQ रे मो गाइडेंस रे पढ़िया पई चाहुच,
then you can get connected with this number. ए number टा होची 7640003000. ए number रे जहाँ तमर queries अछि, you can get connected to this number and they would help you in the matter of dispelling your queries, addressing your queries. Okay, पिला माने कार्ल मार्क्स करो फिलोसफी मो पढ़ाई देली. वर्तमान आस कार्ल मार्क्स करो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट और थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल. देखि दउछि आ भितरे किछि डाउट पिला पचारचंती कि आस्था प्रोडक्शन. सर प्लीज प्रोवाइड डेली क्लास आस्था होछि. डेली का क्लास होछि स्टडी आईक्यू रे. प्रत्येक दिन मो क्लास नउछि. प्रत्येक दिन यूट्यूब क्लास ननेले भी प्रत्येक दिन मो क्लास नउछि. प्रत्येक दिन मो डीटा क्लास नउछि हला. एवं 5 जून रु स्टडी आईक्यू रे हमें आरंभ करछु एथिक्स पेपर. प्रत्येक दिन क्लास चलछि. किछि क्लास यूट्यूब रे छडा होछि, किछि क्लास तमरा स्टडी आईक्यू रो ऐप रे ही मनउछि. अच्छा, वर्तमान कार्ल मार्क्स रो थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल विषय में डिस्कशन करिया पे जाउछि. सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लास? व्हाट डू यू मीन बाय क्लास स्ट्रगल? सो व्हाट इज क्लास? कार्ल मार्क्स हैज जनरली क्लास कहले हमें कौन बुझंती? तमे क्लास कहले बुझ ए ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर ऑक्युपेशन, ए ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग same income, annual or monthly income, a group of people having same economic position in society. ये सब वे तम क्लास को बुझ. सो क्लास रेफर्स टू इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ ए पर्सन. कार्ल मार्क्स भी क्लास रो गोटे डेफिनेशन दउचंती. कोन से कहउचंती? कार्ल मार्क्स इज ऑफ द ओपिनियन दैट क्लास इज एन एग्रीगेट ऑफ पर्सन्स, दोज हु परफॉर्म the same function in the process of production. I am repeating it again. Class is an aggregate of persons, those who perform the same function in the process of production. से कहउचंती प्रोडक्शन प्रोसेस रे जो लोक माने सेम काम करूचंती से मानको आमे सेम क्लास रे रखि परिबा. एग्जांपल देकी मु बुझौची. सर धर गोटे कारपेंट्री शॉप अछि, फर्निचर शॉप अच्छी, से फर्निचर तैयारी होची. से 10 जन लोक काम करछंती. 10 जन रु 9 जन होचंती सेठी कोन वर्कर हिसाब रे काम करछंती. आउ जने भी कारपेंटर, किंतु सी तार ओनर. देखो ऑक्युपेशन अनुसार 10 जन जंकर ऑक्युपेशन हला कारपेंट्री, गोटे क्लास रे पळी आसीबे. किंतु से काम समान करनाती. ओनर टा काम न करि पारे, चेयर रे बसी कि तार सब कथा बुझिबो. आउ जो 9 जन वर्कर अच्छा 9 वर्कर से माने काम करेंगे. तेणु कार्ल मार्क्स ऑक्युपेशन को लेकिन क्लास डेफिनेशन दौना. सी कहते तमें गोटे प्रोडक्शन एक्टिविटी रे कौन काम करुच सेटा डिसाइड करिवो तमरो क्लास कौन. सो सेटा से इंग्लिश रे कहउचंती क्लास इज एन एग्रीगेट ऑफ पर्सन्स, दोज हु परफॉर्म द सेम फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. बुझिएला? ऑक्युपेशन दृष्टि 10 जन कारपेंटर सेम क्लास रे आसीबे, किंतु 10 जन भितर 9 जन हेले वर्कर कारपेंटर एवं आउ जने होची ओनर कारपेंटर. क्लास तंकर दीटा हे गला. ऑल ऑफ यू आर क्लियर? टेक अनदर एग्जांपल. सपोज देयर इज ए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल वेयर 200 डॉक्टर्स आर वर्किंग. धर गोटे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल अच्छी जोठी 200 जन डाक्तर काम करुछंती. 200 जन डाक्तर भितर 2 जन पैसा खर्च करिकी हॉस्पिटल मालिक होइचंती, जोठी आउ 198 डॉक्टर वर्कर हिसाब रे वर्कर डॉक्टर वर्किंग डॉक्टर हिसाब रे काम करछंती. ऑक्युपेशन दृष्टि देखिले 200 जन जाक सेम क्लास रे आसीबे, किंतु मार्क्स कर जो डेफिनेशन दृष्टि देखिले 200 जन सेम क्लास रे आसीबे नाही, दीटा अपोजिट क्लास रे आसीबे. कारण प्रथम 2 जन होचंती ओनर क्लास, remaining 198 doctors, they are the working doctors. All of you are clear? That's the reason I told you Karl Marx has given a definition of class. He is of the opinion that
class is an aggregate of persons, those who perform the same function in the process of production. So all of you are clear what class is all about. Then what is class conflict or class struggle? Class conflict or class struggle कहले हमें कौन बुझिबा? Class conflict बा class struggle कहले हमें कौन बुझिबा? कार्ल मार्क्स कहउचंती प्रत्येक सोसाइटी रे दीटा परस्पर विरोधी क्लास अछंती. In every society there are two opposite classes. कौन दीटा opposite classes? गोटे होची have class, HAV, haves class. have अर्थ ओनर. सेकेंड होची have nots. have nots class. have हैला ओनर, have nots हैला वर्कर. So Marx is of the opinion that in every society there are two opposite classes, that is the owner class and worker class, or the haves class and the have nots class. There exists a conflict of interest between the two classes. This conflict of interest between the two classes in every society is called class struggle or class conflict. बुझे होची? पिला माने लेख. Marx is of the opinion that in every society we find there are two opposite classes, namely the owner class, that is also called haves class, and the worker class, that is also called have nots class. And there exists a conflict of interest between these two classes, which is called class conflict or class struggle. बुझेला? तेणु जदि आजिका सोसाइटी आम देखा इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एठी दीटा क्लास अच्छा किए ओनर ऑफ द इंडस्ट्री, दैट इज इंडस्ट्रियलिस्ट, तापरे वर्कर्स इन इंडस्ट्री, दैट इज इंडस्ट्रियल वर्कर. सो देयर एक्जिस्ट ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स. This conflict of interest between the two classes in modern society is called class struggle or class conflict. All of you are clear? Class struggle or class conflict कहले हमें कौन बुझछंती? Okay. तेनो मोर कहया कथा, Karl Marx wrote a book. The title of the book is Das Capital. गोटे बही लिखिले, से बही रो ना होची Das Capital. C लिखि परिबो, K लिखि परिबो, Das Capital. In this book, Karl Marx has discussed about the theory of a class and class struggle. And in theory of class and class struggle, Karl Marx has adopted historicism. Karl Marx कर गोटे फिलोसफी होची historicism. मैं भूली गली सेठी फिलोसफी टॉपिक रे कहिया पाई. कार्ल मार्क्स कर गोटे फिलोसफी होची हिस्टोरिसिज्म. कार्ल मार्क्स कर गोटे फिलोसफी होची हिस्टोरिसिज्म. से हिस्टोरिसिज्म टाकू थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल ले कार्ल मार्क्स अडॉप्ट करिसंती. कौन हिस्टोरिसिज्म मेक ए डेरिवेशन? हिस्ट्री प्लस इज्म, दैट इज हिस्टोरिसिज्म. हिस्ट्री प्लस इज्म, दैट इज हिस्टोरिसिज्म. हिस्ट्री कहले कौन बुझछंती? हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट सोसाइटी. हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट सोसाइटी. History is the systematic study of the events of the past society. That is history. Ism means philosophy or approach. So what is historicism? The philosophy of history is called historicism. Lekha. Historicism is an approach. Lekha. Historicism is an approach by which an event is studied in present society. An event is studied
in present society by considering its past, by considering its past and predicting its future, repeating it again. Historicism is an approach of Karl Marx by which an event in present society is studied by considering its past and predicting its future. That is called historicism. Okay. So, in context of the theory of a class and class struggle, Karl Marx has adopted historicism, materialism, evolutionism, dialectic, okay, लिखी दिया. In context of his theory of a class and class struggle, in context of his theory of a class and class struggle, comma, Karl Marx has adopted historicism, materialism, evolutionism and dialectic ये सब फिलोसफी की से अप्लाई कर फिलोसफी कौन मु बुझे देछि किछ समय पूर्व. हिस्टोरिसिज्म तो बुझेली. इवोल्यूशनिज्म कौन? इवोल्यूशन प्लस इज्म. इवोल्यूशन मीन्स स्लो, स्टेडी एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज. स्लो, स्टेडी एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज. Slow, steady and continuous process of change is called evolution. Ism means philosophy or approach. So, what is evolutionism? It's the philosophy of studying slow, steady and continuous process of change. That is evolutionism. European society ta kemiti slowly, steadily, continuously change heichi se katha Karl Marx discussion करछन्ते ए context रे. तेणु ये कौन कौन सी अप्लाई कर इवोल्यूशनिज्म कर हिस्टोरिसिज्म कर मटेरियलिज्म तो कौन मु कहीदेछि केमिति सोसाइटी रो चेंज करिया पई एडवांस मैटर इंट्रोडक्शन करिया पई पड़िबो. दैट इज कॉल्ड मटेरियलिज्म. डायलेक्टिक कथा कहिछि कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अपोजिट एलिमेंट. सो आई वांट टू टेल यू द फैक्ट दैट in his sociological analysis of the theory of class and class struggle, Karl Marx has adopted historicism, materialism, evolutionism and dialectic. तेणु हिस्टोरिसिज्म टा केमिति अप्लाई करछन्ति तने क्लास कोन बुझिलो, क्लास स्ट्रगल कोन बुझिलो, पास्ट रे क्लास स्ट्रगल केमिति थिला पृथ्वी रे, एबे क्लास स्ट्रगल केमिति अछि, फ्यूचर को क्लास स्ट्रगल कौन हब, ये सब कथा से डिस्कशन करिवे. सो ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स हैज अडॉप्टेड हिस्टोरिसिज्म. ओके. पुणी डायलेक्टिक केमिति अप्लाई करछनी, पास्ट रे को दीटा ग्रुप भितरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थिला, प्रेजेंट सोसाइटी रे को दीटा ग्रुप भितरे कॉन्फ्लिक्ट अछि. पास्ट रे स्लेव मास्टर और स्लेव भितरे थिला, लैंडलॉर्ड और सर्फ भितरे थिला, लैंडलॉर्ड और टेनांट भितरे. आजिका दिन रे इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रियल वर्कर भितर क्लास स्ट्रगल अच्छी क्लास कॉन्फ्लिक्ट अच्छी. बुझे होची. तेणु क्लास स्ट्रगल टा पास्ट रे केमिति थिला, क्लास स्ट्रगल टा प्रेजेंट रे केमिति अच्छी, क्लास स्ट्रगल फ्यूचर रे कौन हब, क्लास स्ट्रगल को क्लास स्ट्रगल एंड हिजियो बोली कार्ल मार्क्स कहउछथि. सो आज कार्ल मार्क्स इज स्टडीइंग द क्लास स्ट्रगल इन प्रेजेंट सोसाइटी बाय कंसीडरिंग इट्स पास्ट and predicting its future. So Karl Marx approach to class struggle is reflecting his approach of historicism. बुझी पारलो ना नहीं हिस्टोरिसिज्म अप्रोच केमिति अप्लाई करा हला देखि दिए. किछि डाउट तमर अछि कि सोनास वर्ल्ड लिखिछ सर आपण एठी जहा पढ़ाउचंती
एते पढ़ी रिविजन करले एनफ हम कि हाँ ये जहाँ पढ़ाऊँगी ताको पढ़िले दैट इज एनफ कारण मु खाली पढ़ाऊँगी नुहे मु तुमको डिक्टेशन दूसरी पीडीएफ भी दूसरी तेणु किसी ना मु सिंपल लैंग्वेज रे पढ़ाऊँगी मोर वे ऑफ टीचिंग इज नॉट इन वे ऑफ टीचिंग आई डोंट यूज बुकिश लैंग्वेज बहिर लैंग्वेजटा बुझापी कष्ट हुए मन रखापी कष्ट हुए मु तुमको सिंपल लैंग्वेज रे पढ़ाऊँगी तेणु तुम जदि मो क्लास सिंसियरली अटेंड करुच एवं जो डिक्टेशन दूसरी ताको नोट डाउन करुच जो पीडीएफ दूसरी ताको तुम रखुच आउ किछि पढ़िबार आवश्यकता नाही। आउ जने किए लिखिच बेसिक नॉलेज फॉर 248 सर एथिक्स भी हाँ एथिक्स भी मु डेली क्लास नौची मु लास्ट क्लास नहीं थी पा ये 24 तारीख दिन यूट्यूब रे एथिक्स क्लास नहीं थी हाउ टू सॉल्व एथिकल डिलेमा हाउ टू सॉल्व एथिकल डिलेमा से डिस्कशन करी को अप्रोच रे एथिकल डिलेमा को सॉल्व करा हबो पुणी नेक्स्ट क्लासटा बोधे अच्छी 31 तारीख रे एथिक्स रो 11टा बेले तेणु मु जो क्लास पढ़ाऊँगी ताको थरोली तुम घरे पढ़ले दैट इज मोर देन एनफ आउ किछि बही पढ़िया दरकार नहीं मु तो तुमको पीडीएफ दे दोछि क्लास रे डिक्टेशन दे दोछि सहज रे बुझाई दोछि ओके। अच्छा तेणु in context of the theory of class and class struggle Karl Marx has adopted historicism evolutionism dialectic as well as materialism। अच्छा बर्तमान कार्ल मार्क्स केमिति इवोल्यूशनिज्म अप्लाई कले लिसन by adopting evolutionary approach Karl Marx divided the European society into 4 stages। इवोल्यूशनरी अप्रोच अडॉप्ट करके कार्ल मार्क्स यूरोपियन सोसाइटी की 4 भाग में विभक्त करते बाय अडॉप्टिंग इवोल्यूशनिज्म और इवोल्यूशनरी अप्रोच बाय अडॉप्टिंग इवोल्यूशनरी अप्रोच कार्ल मार्क्स डिवाइडेड द यूरोपियन सोसाइटी इनटू 4 स्टेजेस। By adopting evolutionary approach अर्थ केमिति slowly steadily continuously change आसुची सोसाइटी that is called evolutionary approach। By adopting evolutionary approach Karl Marx divided the European society into 4 stages। कौन फर्स्ट होची primitive communism, सेकेंड होची ancient slavery, थर्ड होची medieval feudalism, फोर्थ है मॉडर्न कैपिटलिज्म। So I want to tell you the fact that Karl Marx adopted evolutionism or evolutionary approach in context of his analysis of the theory of class and class struggle। जेतबले कार्ल मार्क्स theory of class और class struggle ऊपर डिस्कशन करुथिले सेतबले इवोल्यूशनरी अप्रोच अप्लाई करले। इवोल्यूशनरी अप्रोच को हमें इवोल्यूशनिज्म भी कहती। इवोल्यूशनरी अप्रोच इज सेम एज इवोल्यूशनिज्म। इवोल्यूशन को डेरिवेशन करिवो इवोल्यूशनिज्म, इवोल्यूशन प्लस इज्म दैट इज इवोल्यूशनिज्म। इवोल्यूशन अर्थ स्लो स्टेडी एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज। Easy means philosophy or approach. So the approach of slow, steady and continuous process of change that is called evolutionism। Okay, European society रे change टा केमिति slowly, steadily, continuously आसीछि सेटा होछि evolutionism। So by applying evolutionism, Karl Marx
divided European society into 4 stages. कौन से 4टा स्टेज? फर्स्ट हला primitive communism. Primitive means very very ancient, very very old. Communism अर्थ spirit of equality. केमिति बहुत एंशिएंट समय यूरोप रे कम्युनिज्म थिला. केमिति थिला? You know, once upon a time, people in Europe, they were wandering in jungle. The moment they were feeling hungry, they were plucking the fruits and satiating the hunger. से समय कथा. जंगल ले मनीष बुलुला, भोक कले फलमूल खाऊला, शोष कले झरणार पानी पीऊला. झरनाटा को कौन गोटे लोक कह कि ये झरनाटा मोर ना गोटे जंगल को गोटे लोक कह कि जंगल ए गछ मोर. तेणु गछरे फल जो फली थिला सब लोक खाऊले. तांको अजणातारे तांको भितरे इक्वालिटी थिला. किंतु एटा भारी माने कोन एंशिएंट पीरियड रे थिला. प्रिमिटिव मीन्स वेरी एंशिएंट. Communism means the spirit of equality. So long ago, once upon a time, while civilization was not dawned, people in Europe were wandering in jungle in nude condition and collecting the bark of the trees for covering their body. Whenever they were feeling hungry, they were plucking the fruits from the trees in jungle and satiating their hunger. The moment they were feeling thirsty, they were fetching water, drinking water from streams or river. At that point of time, without their knowledge, unconsciously, undeliberately, communist society was existing. It's a society characterized by equality. जंगल रो केही मालिक नथिला, गछर केही मालिक नथिला, समस्ते गोटे सिमिलर टाइप ऑफ लाइफ लीड करुथिले. दैट इज द फर्स्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव कम्युनिज्म. बुझी पारुच ना नाही? प्रिमिटिव मीन्स वेरी एंशिएंट. कम्युनिज्म मीन्स स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी. सो इन वेरी वेरी एंशिएंट टाइम, spirit of equality was persisting among the people of Europe while they were wandering in jungle in nude condition, plucking the fruits for satiating their hunger and drinking water from the rivers and streams for quenching their thirstiness. That period is called primitive communism. तेनु primitive communism रे कौन थिला? प्राइवेट प्रॉपर्टी बोली किछि जिंस नथिला. जंगलटा तो समस्तंकर, गछ समस्तंकर. सो प्राइवेट प्रॉपर्टी नथिला. पिला माने कार्ल मार्क्स कहउचंती प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द रूट कॉज ऑफ emergence of a class and a class division. तेनु primitive communism अर्थ no private property, no private property. जेहेतु private property नथिला, so there was no class. As there was no class, there was no class division. As there was no class division, there was no class conflict. No class conflict. So primitive communism रे there was no private property, there was no class, there was no class division and there was no class struggle. बुझी होची? तेनो फर्स्ट स्टेज को कार्ल मार्क्स कहउचंती it is a classless society, it is a class struggle less society, it is a class conflict less society, it is a private property less society. तेणु प्रिमिटिव कम्युनिज्म रे क्लास स्ट्रगल नथिला, क्लास कन्फ्लिक्ट नथिला. देखि दउछि तमर किछि देइछ कि देखि दउछि तिके तम मेसेज कि कोन देइछ तापर आगेबा. नहीं आउ किसी कार मेसेज ना. हाँ ठीक अच्छे. अच्छा प्राइवेट प्रॉपर्टी नथिला. तापरे आसला सेकेंड स्टेज है एंशिएंट स्लावरी. एंशिएंट स्लावरी स्टेज रे कौन है? सोसाइटी रे दी प्रकार लोक आसिले. स्लेव मास्टर आ गोटे होची स्लेव्स. एमती दीटा ग्रुप रो लोक आसिले.
एंशिएंट स्लेवरी रे आसीगला कैटल रियरिंग एक्टिविटी, कैटल रियरिंग एक्टिविटी, गोरु गोरु पालन पशु पालिबा ये सब जिनस पळि आसला, गो पालन पशु पालन। तेणु एंशिएंट स्लेवरी रे some people those who were physically strong they captured the physically weak people, strong people became the slave master, weak people became the slave। तेणु जो माने स्लेव मास्टर हेले से माने फिजिकली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, जो माने वीक से माने हेले फिजिकली वीक से माने हेले स्लेव। तेणु स्ट्रांग लोक माने वीक लोक को कैप्चर करके रखिले, से वीक लोक हेले स्लेव, स्ट्रांग लोक हो गले स्लेव मास्टर। एठी फर्स्ट टाइम आसीगला प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी कौन हैला? स्ट्रांग लोकंकर प्राइवेट प्रॉपर्टी हैला वीक लोक, अर्थात स्लेव हैला प्राइवेट प्रॉपर्टी स्लेव मास्टर कर। तेणु सेकेंड स्टेज ऑफ इवोल्यूशन दैट इज एंशिएंट स्लेवरी रे प्राइवेट प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम आसिला। प्राइवेट प्रॉपर्टी हैला कैटल, स्लेव मास्टर कैटल रो मालिक हले एवं स्लेव रो मालिक हले। तेणु प्राइवेट प्रॉपर्टी आसिला। प्राइवेट प्रॉपर्टी आसीबा लागी क्लास डिवीजन आसीगला। क्लास डिवीजन लगी क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी आसीगला। कौन कॉन्फ्लिक्ट? स्लेव मास्टर एक्सप्लोइट कला ना नहीं स्लेव को कला। तेनो फर्स्ट टाइम क्लास स्ट्रगल एमर्ज्ड इन सेकेंड स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। तापरे आसला थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज आसिला थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज तो ना कौन? मेडिएवल फ्यूडलिज्म। मेडिएवल फ्यूडलिज्म ये कौन आसला ना एग्रीकल्चर आसीगला। एग्रीकल्चर पड़ी आसला। सम पीपल दे पोजेस्ड प्लेंटी पैचेस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। किछि लोक हजार हजार एकर जगार मालिक बनीगले। दे आर कॉल्ड फ्यूडल लॉर्ड। फ्यूडल लॉर्ड। On the other hand, there were majority of the people those who are not having ownership to agricultural land. They took the land from the landlord on the basis of tenancy. They started working on the land and shared certain proportions or certain portions of the product to the owner of the land. They are called feudal serfs. Feudal serfs. तेणु देख थर्ड स्टेज रे दीटा क्लास पड़ी आसला। फ्यूडल लॉर्ड क्लास जो माने एग्रीकल्चरल लैंड रो ओनर। फ्यूडल सर्फ हेले को माने जो माने लैंड रो ओनर नुहति। लैंड को नेले भाग चाष कले किछि माने जहा प्रोड्यूस कले तार हाफ की 1/3 ओनर को दे देले। ता माने कोन? एठी लैंड लॉर्ड टा सर्फ को एक्सप्लॉइट कला ना नहीं कला। एटा होची तमर क्लास स्ट्रगल बा क्लास कॉन्फ्लिक्ट। कोथरे? थर्ड फेज ऑफ इवोल्यूशन ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड एंड फ्यूडल सर्फ। नेक्स्ट होची फोर्थ स्टेज आसिला। फोर्थ स्टेज ऑफ इवोल्यूशन एठी कोन हैला? एठी इंडस्ट्री पड़ी आसला। सम पीपल इन्वेस्टेड मनी, दे कंस्ट्रक्टेड और दे इरेक्टेड इंडस्ट्री। राइट नाउ दे बिकेम द ओनर ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तो प्रोडक्शन रो मेन पार्ट हे गला। तेन दीटा ग्रुप रो लोक आसले। कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट्स आउ इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियलिस्ट की कार्ल मार्क्स कहउछन्ती बुर्जुआ। बुर्जुआ। इंडस्ट्रियल वर्कर को कार्ल मार्क्स कहउछन्ती प्रोलेटारिएट। पिला माने ये दीटा वर्ड तमरा इंग्लिश कॉन्सेप्ट नहंती। ए माने होचंती फ्रेंच वर्ड किंतु इंग्लिश रे एटा फ्रीक्वेंटली यूज होची। इंडस्ट्रियलिस्ट इज कॉल्ड बुर्जुआ, इंडस्ट्रियल वर्कर इज कॉल्ड प्रोलेटारिएट। दे आर नॉट इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स, दे आर फ्रेंच कॉन्सेप्ट्स बट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन टुडेस कॉन्टेक्स्ट। तेनो देखो इन फोर्थ स्टेज ऑफ इवोल्यूशन पीपल केम टू नो
how to construct industry. Some people, those who constructed industry by investing money, they became the industrialist. They are called bourgeois in Marxian analysis. On the other hand, majority of the people, they were not the owner of industry. They went to the industry, worked in industry, got a daily or monthly wage. They are called industrial workers, and in Marxian analysis they are called proletariat. Industrialist told the industrial worker to work for a long period of time with less wage. On the other hand, industrial worker wanted to work for a short period of time with higher wage. In this way, there also came to exist a conflict of interest between industrialist and industrial worker, that is called class struggle or class conflict in modern capitalist society. पिला माने बुझुच ना नाही, तेणु मु कहूची आगे बुझेली तुमको व्हाट इज क्लास, तापरे बुझेली व्हाट इज क्लास स्ट्रगल और क्लास कॉन्फ्लिक्ट, तापरे मु कहिली कार्ल मार्क्स केमिति हिस्टोरिसिज्म अप्लाई करिकी बुझौचंती पास्ट रे क्लास स्ट्रगल कौन थिला, प्रेजेंट रे क्लास स्ट्रगल कौन अछि, फ्यूचर को क्लास स्ट्रगल कौन हबो। तापरे कार्ल मार्क्स कौन करचंती इवोल्यूशनरी अप्रोच और इवोल्यूशनिज्म के अप्लाई करिकी यूरोपियन सोसाइटी की चारि भाग रे विभक्त करिदेले। फास्ट ना होची प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जोठी से कहिले प्राइवेट प्रॉपर्टी नथिला, क्लास नथिला, क्लास स्ट्रगल नथिला। सेकेंड स्टेज कथा कहिले तार ना होची एंशिएंट स्लावरी। एंशिएंट स्लावरी रे फर्स्ट टाइम प्राइवेट प्रॉपर्टी आसीला। प्राइवेट प्रॉपर्टी आसीबारु प्राइवेट प्रॉपर्टी हला कोन कैटल आउ स्लेव, दीटा ग्रुप रो क्लास आसिले एंशिएंट स्लावरी रे। किए ना तमरो स्लेव मास्टर आउ स्लेव। तापरे कोन हला तांको भितरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आसिला। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आसिला का भितरे फ्यूड स्लेव मास्टर और स्लेव भितरे, दैट इज कॉल्ड क्लास स्ट्रगल इन एंशिएंट स्लेवरी। तापरे थर्ड स्टेज आसिला। थर्ड स्टेज रो ना होची मेडिवल फ्यूडलिज्म। एटी एग्रीकल्चर हला मेन प्रोडक्शन, दीटा क्लास आसिले फ्यूडल लॉर्ड और फ्यूडल सर्व, तांको भितरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आसिला, दैट इज कॉल्ड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तापरे फोर्थ स्टेज ऑफ इवोल्यूशन दैट इज मॉडर्न कैपिटलिज्म। मॉडर्न कैपिटलिज्म रे कौन हैला ना ऑब्वियसली इंडस्ट्री बिकेम द मेन मोड ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्री की नहीं कि दीटा क्लास रो लोक आसिले, इंडस्ट्रियलिस्ट और मार्क्स का भाषा रे इंडस्ट्रियलिस्ट आउ इंडस्ट्रियल वर्कर, दैट इज प्रोलेटेरिएट। हियर आल्सो conflict took place between industrialist and industrial worker, that is called class struggle or class conflict in modern capitalist society. तापरे कार्ल मार्क्स कहउचंती एठी कोन हबो इंडस्ट्रियल वर्कर माने रिवोल्यूशन करिवे, तांको रिवोल्यूशन सक्सेसफुल हबो। सक्सेसफुल हला परे फ्यूचर रे कम्युनिज्म आसीबो। कम्युनिज्म रे सब प्रकार क्लास हटी जीवो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हटी जीवो, स्टेट हटी जीवो, इक्वालिटी रहिबो पृथ्वी रे सब लोकंग भितरे, ता माने क्लास स्ट्रगल कम्युनिस्ट सोसाइटी रे हटी जीवो। एठी हिस्टोरिसिज्म ना नाही, कारण पास्ट रे क्लास स्ट्रगल नथिला प्रिमिटिव कम्युनिज्म रे। फ्यूचर रे जो कम्युनिज्म आसीबो तार सेठी भी क्लास स्ट्रगल बा क्लास कॉन्फ्लिक्ट रहिबो नाही। ता मझी रे जो स्टेज गुडा रहिला सेठी क्लास कॉन्फ्लिक्ट और क्लास स्ट्रगल अछि। तेनो क्लास एंड क्लास स्ट्रगल इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी मु एठी लेखि छि सब ए पॉइंट गुडा मु आगु को डिस्कशन करिवि। क्लास एंड क्लास स्ट्रगल इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी तळे पढेइबि, सेतळे डिटेल डिस्कशन करिवि। किंतु आज तुम गोटे ब्रीफ आइडिया खाली मु कार्ल मार्क्स को ऊपर देली जे कार्ल मार्क्स कर फिलोसफी कौन, कार्ल मार्क्स कर फिलोसफी कौन, और कार्ल मार्क्स कर थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल कौन। मु भाबुची तुम समस्ते जिनस बुझी पार्थिबो, देखिदेली आउ काहर किछि क्वेरीज नाही। तेनो आज आउ मु अधिका जिनस पढ़ो नाही। पुण थरे फाइनली कहि दोची जे स्टडी आईक्यू तरफरु 5 जून रे मु गोटे नुआ बैच एथिक्स रे आरंभ करुची, जो थरे गत 12 वर्ष आईएएस परीक्षा रे पड़ीथिबा ईच एंड एवरी क्वेश्चन नो आंसर डिस्कशन मु करिवि।
ता संगे एंटायर सिलेबस जो 7टा यूनिट अच्छी ताको डिस्कशन करी ता संगे ओएस आउ आईएस रो सिलेबस समान तेणु ता संगे कौन करी ओएस तो मात्र 2 वर्ष एथिक्स परीक्षा होती 2 वर्षर परीक्षा रे जहाँ क्वेश्चन पड़ी सब क्वेश्चन ना आंसर डिस्कशन करी डिक्टेशन देदेवी पीडीएफ भी तुमको देदेवी ओके तमें जो माने चाहूच स्टडी आईक्यू रे मो गाइडेंस रे पढ़िया पाई तमें ये जो नंबर दिखाई नंबर रे कांटेक्ट करिकी तमें जहाँ तुम डाउट अच्छी जहाँ तुम क्वेरीज अच्छी यू कैन talk to the concerned person related to your queries okay and I extend my thankfulness to you all for attending today's YouTube live class. Wish you all the best. Thank you.